Hey, hello all. I'm Charvak Lokayata and I welcome you all in today's live. It's been many days since I did live, probably because I was, stuck up with reading some books and works. So this will be just an open discussion और आज हम बात करेंगे उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट के ऊपर जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ है whether it's valid. Let's also discuss the bypoll results and politics. So the channel will be dedicated to things like superstition, politics, religion, economics, and debunking pseudoscience, etc., etc. These are the wide varieties of topics, and I hope like, share this video, comment on this live, and subscribe to my channel. That's the best way you can support me. Currently 801 subscriber I have. Let's get to 1000 subscriber and more, so that we can continue and keep up with the good work we are doing. Okay, so let me pin the StreamYard link for those who want to debate me, chat with me, share your thoughts, etc. One second. हेलो या सो हम उदयनिधि स्टालिन के बारे में ही बात कर रहे थे. देखिए, उनका जो बयान था कि सनातन धर्म एक विषैला जहर है और एक वायरस है, उन्होंने धर्म के ऊपर टिप्पणी किया था. उन्होंने व्यक्तिगत लोगों के ऊपर टिप्पणियां नहीं की थी. हमको ये समझना है. लेकिन लोग क्या समझ रहे, नहीं हम पर कुछ व्यक्तिगत बोल दिए, धर्म पर बोल दिया, हमारे धर्म का अपमान हो गया. धर्म का क्या तब अपमान नहीं होता जब मंदिरों में पाया जाता है पंडित जी रेप करते हुए, तब धर्म का अपमान नहीं होता है. तब धर्म का अपमान नहीं होता है जब दलित को मारा पीटा जाता है मंदिर के बाहर. तब धर्म का अपमान नहीं होता है जब कोई आपका क्या बोलते हैं तांत्रिक पकड़ा जाता है, पुजारी रेप केस में. तब धर्म का अपमान नहीं होता है जब मंदिर में चोरी होती है. तब धर्म का अपमान नहीं होता है जब मंदिर का जो पुजारी है वो पकड़ा जाता है हेड स्पीच में. तब धर्म का अपमान नहीं होता है. लेकिन धर्म का तब अपमान होता है जब उदयनिधि स्टालिन ने बोल दिया कि भाई सनातन धर्म जो है वो एक विषैला जहर है, वो एक वायरस है. गजब है यार. वायरस हम जैसे समझते हैं वो स्प्रेड होता है. तो अगर वायरस की अगर हम बात करेंगे तो भाई रिलीजन तो सारे वायरस है. जब सारे रिलीजन वायरस है तो सनातन धर्म कैसे वायरस नहीं है? ये भी तो स्प्रेड हुआ है अलग अलग लोगों में. ब्राह्मण से क्षत्रिय में, क्षत्रिय से वैश्य में, वैश्य से शूद्र में, शूद्र से अति शूद्र में, और समाज के हर जाति हर तबके में स्प्रेड हुआ है जाति का जहर. तो यही तो है सनातन धर्म. और इस पे अगर कोई बोले कि ये वायरस है, ये गलत है, तो आपका आपत्ति है. अयोध्या का एक मठाधिपति या जो पुजारी है वो 10 करोड़ का रिश्वत दे रहा है उदयनिधि स्टालिन के सर तन से जुदा करने का. अरे भाई, अब कौन लोग हैं, वो लोग कहाँ चले गए जो ये दलाल देते थे कि भाई हम लोग सर तन से जुदा नहीं करते हैं? मैं उनकी सुनना चाहता हूँ जो एक्स मुस्लिम चैनल में दलाल बन के घूमते हैं और बोलते हैं कि हम हिंदू सर तन से जुदा नहीं करते हैं. भाई अभी अभी तो आया एक उदयनिधि स्टालिन के सर तन से जुदा करने को 10 करोड़ का रुपया देंगे इनाम. हाँ, और फिर बोलते हैं कि हम सरतन से जुदा नहीं करते. अरे सरतन से जुदा नहीं करते तो भाई पुराणों में ऐसा क्यों लिखा है कि कृष्ण ने शिशुपाल का सरतन से जुदा कर दिया, शिव ने गणेश का सरतन से जुदा कर दिया, धृष्टद्युम्न ने द्रोण का सरतन से जुदा कर दिया, परशुराम ने अपनी माता का सरतन से जुदा कर दिया. तो इस सरतन से जुदा का जो दलाल
देने आ जाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई कहाँ है, डिफेंड करने क्यों नहीं आते यहाँ पे, आइए ना डिबेट करते हैं इस पे। तो उदयनिधि स्टालिन ने एक चीज क्या बोल दिया, फट गया इनका। उन्होंने तो बोला है कोर्ट में केस कीजिए, और मैं कोर्ट में डरने वाला नहीं हूं, मैं तो खोल के दिखाऊंगा अंबेडकर और पेरियार का। बेइज्जती करवानी थी क्या, कि गीता प्रेस गोरखपुर, अंबेडकर, पेरियार और आपका जितने भी पब्लिकेशन से पुराने पब्लिकेशंस के बुक्स, पुराणों के या शास्त्रों के, वो खोल के दिखाना है। बेइज्जती और करवानी है तो भाई और जाए कोर्ट में केस करें उनके अगेंस्ट। अगर नहीं करवानी है तो आइए शांति से बैठ के डिबेट कीजिए, सामने आमने सामने पब्लिक के सामने। वॉर ऑफ वर्ड्स कीजिए भाई, वॉर ऑफ वेपन्स, लेट्स हैव वॉर ऑफ वर्ड्स। डिबेट कीजिए अगर आपको इतना ही आपत्ति, आपको लगता है कि आपको सनातन धर्म का अच्छा ज्ञान है, आपका अच्छा अनुभव है, और आप लगता है कि वो जो कह रहा है वो गलत है और आप उसको डिबंक कर सकते हैं, तो आइए डिबेट कीजिए, उनको वो बताइए कि भाई वो क्यों गलत है और हम क्यों सही है। डिबेट नहीं करना है, सीधा सीधा पंडित जी जो है वो अयोध्या के, वो बोल दिया कि भाई जो उदयनिधि स्टालिन का सरतन से जुदा कर देगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। और ऐसे ये क्रिमिनल नहीं है तो क्या है। अगर कोई व्यक्ति, रैंडम व्यक्ति यही बात कहता कि उसका सर तन से जुदा करके 10 करोड़ दो, उसको क्रिमिनल बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? हाँ बोला जाएगा। तो जो व्यक्ति ये बोल रहा है उसको क्यों क्रिमिनल नहीं मान रहा समाज? तो मोरालिटी जो का, मोरालिटी का भी जो मतलब वो क्या बोलते हैं, दलाली करने आ जाते हैं, वो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ भाई, मोरालिटी जो है ये फिक्स्ड नहीं है हमारे समाज में। मोरालिटी है क्या, किसको मोरालिटी बोलेंगे? ये तो सेक्टेरियन थॉट हुआ। आप इस सेक्ट में हो तो आप इस सेक्ट के लिए जो करोगे वो मॉरल होगा, या इस सेक्ट के बिलीफ को मानोगे वो मॉरल होगा। या फिर ये मोरालिटी हो सकता है कि भाई फिर एमोरालिटी, मतलब जो मोरालिटी नहीं है वो ये हो सकता है कि जो आप इस सेक्ट के बिलीफ को नहीं मानोगे या उस सेक्ट को आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, नहीं मानोगे, वो इमोरल होगा। तो सेक्टेरियन हुआ मोरालिटी। मोरालिटी तो फिक्स्ड नहीं है कहीं पर भी देखा जाए तो, उसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन भी नहीं है मोरालिटी का। हाँ, ह्यूमनिज्म का, ह्यूमैनिटी का थोड़ा बहुत हमें यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है, मोरालिटी का तो नहीं मिल रहा हमें। तो फिर ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर जो लोग क्राइम करते हैं वो कोई रिलीजन का नाम लेकर के क्राइम करते हैं, ब्लास्फेमी करते हैं तो उनको मार देते हैं। नरेंद्र दाभोलकर को मारा गया, गौरी लंकेश को मारा गया, गोविंद पंसारे को मारा गया, कलबुर्गी को मारा गया, फारूक, मोहम्मद फारूक जो मदुरई से था, एक्स मुस्लिम, उसको मारा गया। इतने सारे लोगों को मारा गया हमारे देश में, और फिर भी बोलते हैं कि हम तो भाई बड़े डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। अरे कौन सी डेमोक्रेसी है जब तक आप एक डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म को आप एक्सेप्ट नहीं करते, क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन, क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक पॉलिसी, जब आप इस चीज को ही एंटरटेन नहीं करते तो आप कैसे डेमोक्रेसी हुए? जब हम सोसाइटी में टॉलरेंट होंगे टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिकल ओपिनियंस, तभी तो हमारा सोसाइटी प्रोग्रेस होगा ना। लेकिन हमारे यहाँ तो बोल दिया गया नहीं भाई, क्रिटिसिज्म करोगे तो भाई कुछ हो जाएगा, डर के मारे अपना मुंह बंद करके घर में ही बैठे रहो, बस। ये है हमारा सोसाइटी। हम अपने बच्चों को नपुंसक नहीं बना रहे तो क्या बना रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं। और जिन लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं वो आए और डिबेट करें। और अभी का ही रिसेंट न्यूज है कि पाकिस्तान का कोर्ट जो है वो 4 लोगों को ब्लास्फेमी के लिए, वो भी ऑनलाइन में कुछ लिख दिया था, सोचेगा ऑनलाइन में कुछ लिख दिया था, उसके लिए डेथ सेंटेंस। वाह भैया, ऑनलाइन में तो भाई बिल गेट्स भी बहुत कुछ लिखता है, ऑनलाइन में तो मिडिल क्लास का आदमी भी कुछ लिखता है, गरीब भी कुछ लिखता है, तो आप किस किस को पनिश करोगे? ऑनलाइन में तो भाई आपका जो जॉर्जिया मेलोनी है वो तो बोलता है मस्जिदों को बंद करो, मस्जिदों को ये करो वो करो, तो आप जॉर्जिया मेलोनी को पकड़ो ना, उनको ब्लास्फेमी का पनिशमेंट दो ना, डेथ सेंटेंस दम है तो। वहां पे तो नहीं होता आपका।
सऊदी अरेबिया का मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बहुत सारी हदीस को नकार दे रहा है। हदीस जो है उनको नकार रहा है और वो मॉडरेट इस्लाम कर रहा है। तो पाकिस्तानी जो अपने आप को समझते हैं ठेका ले रखे इस्लाम का, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ, जाके मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर एक फतवा डालो ना। एक फतवा डालो, दम है तो, मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट। और एक काम करो, उनके अगेंस्ट एक कोर्ट केस चला के बोलो कि ये ब्लास्फेमी किए थे मोहम्मद बिन सलमान। ये हदीस को निकाल दिया उन्होंने, कुरान को ये रीइंटरप्रेट किया या कुछ और किया, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, बस उस नाम पे केस डाल के दिखाओ। नहीं, वहां पे इनका ब्लास्फेमी नहीं चलेगा, वहां पे इनका वो क्या बोलते हैं वो जिहाद नहीं चलेगा। हाँ, इनके ऊपर चलेगा जो अछूत लोग थे, जो अनटचेबल लोग थे, और वो लोग जो क्रिश्चियन बने अनटचेबल लोग, उन पे चलेगा ये है इनका प्लाय पाकिस्तान में। ये है हाल पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक प्लेयर का नाम था यूसुफ यहाना। यूसुफ यहाना क्रिश्चियन थे, और बतौर क्रिश्चियन वो अच्छा रन स्कोर करते थे। तो इनको तो डर हो गया, रे भाई एक हिंदू एक क्रिश्चियन जो है वो कैसे इतना सारा रन कर सकता है, एक क्रिश्चियन जो कैसे इतना सारा रन बना ले सकता है। नहीं, मुसलमान ही होना चाहिए जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा। चलो इसको कन्वर्ट करो। पता नहीं क्या दबाव बनाया, कन्वर्ट हो गए, वो मोहम्मद यूसुफ बन गए। वही आप हाल देखिए दनिश कनेरिया का। अरे हिंदू तक क्या हुआ, लेकिन विकेट तो ले रहा था ना वो अपने टीम के लिए, मैच तो जिता रहा था ना। लेकिन नहीं, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन। अरे एक हिंदू है, एक हिंदू को कैसे इतना सारा विकेट आ सकता है? एक हिंदू जो है वो कैसे इतना सारा अच्छा बॉलिंग और एवरेज ला देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको टीम से हटाओ भाई, किसी तरह हटाओ, कंट्रोवर्सी के नाम पे हटा दो इसको, टीम से साइडलाइन करो। ये क्या दनिश कनेरिया के साथ रिलीजन वहां पर क्रिकेट टीम भी रिलीजन देख करके प्लेयर का सिलेक्शन कर रहा है, जाति देख करके सिलेक्शन कर रहा है। आप जितने भी पाकिस्तान प्लेयर के नाम उठा के देखेंगे 90% है वो सब अपर कास्ट मुस्लिम। सलीम मलिक, शोएब मलिक राजपूत, शोएब अख्तर जाट, वकार यूनिस ब्राह्मण कन्वर्ट मुस्लिम, सलमान भट्ट ब्राह्मण कन्वर्ट मुस्लिम, इमरान खान, शाहिद अफरीदी, ये सब पठान है। हाँ, तो ये हाल है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में भी जातिवाद है वहां पर। लोग वहां भले ही नाम मानने को तैयार हो, लेकिन ये सच्चाई है वहां की सोसाइटी की, जिस पे मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं। तो कोई रिलीजन पे कुछ बोले क्या आपत्ति है? तो मैंने दो एग्जांपल दिए थे ब्लास्फेमी के, एक है उदय निधि स्टालिन का केस, और एक है आपका पाकिस्तान में जो हुआ। दोनों चलिए मान के भी चले, दोनों ने बोल दिया। समाज जो है उनको मारने पे ही क्यों उतार होता है? पहला थॉट ये क्यों होता है इनको मार डालो? ये क्यों नहीं होता कि हम जाके डिबेट करेंगे, हम जो है इनको मतलब हरा के दिखाएंगे डिबेट में, इनका मुंह बंद करके रहेंगे डिबेट में? ये क्यों नहीं होता? मेरा ये क्यूरियोसिटी है जानने का, हमारा समाज ऐसे क्यों है? ये ऐसे क्यों नहीं सोचता? बाकी दुनिया में जब रिलीजन का क्रिटिसिज्म होता है तो पहले ये होता है कि चलिए डायलॉग करते हैं, डिबेट करके देख लेते हैं क्या होता है। वहां पे एक स्टैंडर्ड है उसका। यहाँ पे डिबेट क्यों नहीं होता? पहले डायरेक्ट ये थॉट क्यों होता है कि भाई किसी ने मोहम्मद पे बोल दिया, किसी ने राम पे बोल दिया, कृष्ण पे बोल दिया, सरस्वती पे कुछ बोल दिया, किसी और ने कुछ किसी और पे कुछ बोल दिया, जाके उसको मतलब डायरेक्ट मार डालो, या उसके ऊपर केस करके उसका मुंह बंद करो। डिबेट क्यों नहीं करते? मेरे को आइए ना, डिबेट कीजिए, रेफरेंस पे बात करते हैं, स्क्रिप्चर पे बात करते हैं। आपका स्क्रिप्चर क्या लिखा है, आपके रिलीजियस टेक्स्ट आपके बारे में क्या बोल रहा है, ये देख लीजिए क्या लिखा है। कर ही रहे हो तो चलिए कोर्ट में ही खोल के दिखा देते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का, इस्कॉन का, आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का, इन सब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बुक्स है वो खोल के दिखा देते हैं, लीजिए ये सारे बुक है। गीता प्रेस में ये बुक लिखा है, इस्कॉन के बुक में ये लिखा है, रामकृष्ण मिशन के बुक में ये लिखा है।
लीजिए, यहां से मैंने रेफरेंस उठा के दिया, आप बोलिए क्या करेंगे कोर्ट में? तब क्या कर लोगे? दिखा देंगे हम कोर्ट में भी, अगर केस करे हो तो बजाय ये सब करने के आप सीधा सीधा ऑनलाइन में पब्लिक के सामने आइए और डिबेट कीजिए, बजाय आप अपनी बेइज्जती करवाने के या मार के क्राइम अपना हाथ गंदा करने के। उससे अच्छा है कि आप आइए, वॉर ऑफ वर्ड्स करते, लेट्स हैव अ वॉर ऑफ वर्ड्स डिबेट यहाँ पे, रादर देन किसी को मारना या थ्रेटन करना। ये क्या बात हुआ? ये तो पुराने टाइम की सोसाइटी की सोच थी, जब डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज नहीं था हमारे देश में, जब पूरे दुनिया में अगर हम देखा जाए तो डेमोक्रेसी नाम का कोई ढंग का कोई ये नहीं था। राजा लोग लड़ते थे, राजा दो डिसीजन ले लिया, ताली बजा के निकलो या सिर झुका के जाओ, बस ये था सोसाइटी। लेकिन आज ऐसा थोड़ी होता। आज हम तो पॉलिटिशियन अगर काम ना करे तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, किसी और को हम वोट दे के लाते हैं पावर में। ये है हमारा सोसाइटी आज के टाइम पे। तो हमारा समाज विकास कब करेगा? विकसित क्यों नहीं हो रहा है? और ये तो जियो पॉलिटिक्स पे मैं बात करने जाऊंगा तो जो लोग, हाँ, हालांकि इस्लाम तो प्रॉब्लम है, लेकिन उस इस्लाम नाम के एक चिंगारी को आग देने का काम, घी डालने का काम, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया है तो वो यूएस ने किया है। ये एक सच्चाई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप चाहे अफगानिस्तान वॉर उठा के देख लीजिए, इराक वॉर उठा के देख लीजिए, लिबिया वॉर उठा के देख लीजिए, यमन वॉर उठा के देख लीजिए, जहां जहां यूएस ने अपना बेस बनाया वहां वहां इस्लामिक टेररिज्म बढ़ा। लिबिया में तो भाई स्लेव मार्केट चलता है, जिहादियों का स्लेव मार्केट। लिबिया इन्वेजन से पहले मोहम्मद गद्दाफी, चले वो मान लिया कुछ भी लीडर, वो बकवासी सही, लेकिन इस्लामिक जिहाद का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थे वहां पे। हाँ, गद्दाफी एक डिक्टेटर था, आप कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है, लेकिन तुम वहां अल नुसरा फ्रंट या आईसिस या आईएसआईएल तो नहीं था। लेकिन 2013 में यूएस ने उसको मार गिराया, तब से लिबिया का हाल देख लीजिए, आईएसआईएल हो, आईसिस हो, अल नुसरा फ्रंट हो, पता नहीं जितने भी ये है, वो सब जो है वो लौंडियों का बाजार लगाते हैं, स्लेव मार्केट, औरतों का पकड़ पकड़ के। ये हाल है लिबिया का। अफगानिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान में 1979 में एक पपेट गवर्नमेंट आया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिज्म से बहुत लोगों को दिक्कत है, मैं भी सहमत नहीं हूँ कम्युनिज्म से, बहुत चीजें, ठीक है, बहुत चीजें गलत की है, और होना भी चाहिए क्रिटिसिज्म उनका भी। लेकिन अफगानिस्तान में यूएस ने क्या किया? कम्युनिज्म को लड़ने के नाम पे ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया। क्या खड़ा किया? ओसामा बिन लादेन, और उसका लीडर कौन था? मुजाहिदीन। और मुजाहिदीन का ही ऑफशूट था अलकायदा। लीजिए भाई, ये आपका है, बड़ा आपने कम्युनिज्म को फाइट कर लिया। फिर आया 9/11 के बाद अफगानिस्तान इन्वेजन हुआ, 20 साल बाद फिर वही अफगानिस्तान तालिबान के हाथ सौंप के आ गए। क्या उखाड़ लिया? जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोला था वॉर ऑन टेररिज्म। वॉर ऑफ टेररिज्म के नाम पे टेररिज्म बढ़ा है, टेररिज्म कम नहीं हुआ है। यूएस ने वॉर ऑफ ड्रग्स किया था, वॉर ऑन ड्रग्स, रिचर्ड निक्सन ने अपने टाइम पे किया था 60s 70s में। तब से अगर आप देखेंगे ड्रग्स का यूसेज ज्यादा बढ़ा है। तो होता यह है कि जब भी आप जियो पॉलिटिक्स देखेंगे यूएस में, वर्ल्ड वाइड, अगर उसका थोड़ा हिस्ट्री, तो जब भी ये बोलते हैं वॉर ऑन समथिंग, तो वो चीज को वो बढ़ावा दे रहे हैं। वॉर ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज कम हो थोड़ी हो रहा है, उल्टा क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब भी कोई जियो पॉलिटिक्स में आप स्टेटमेंट देखते हैं यूएस का वॉर ऑन समथिंग, इट डजंट मेक थिंग दैट थिंग बेटर, इट मेक्स दैट थिंग वर्स्ट। ये कंक्लूजन निकलता है। इराक में वॉर हुआ 2003, इराक इन्वेजन,
सद्दाम हुसैन को मार दिया, खत्म। क्या हुआ वहां पे? आईसिस नाम का एक ग्रुप आया, और ऐसा ग्रुप आया कि उसने सीरिया को नहीं छोड़ा, इराक को नहीं छोड़ा, इवन जो जॉर्डन है वहां तक वो पहुंच गया। ग्लोबल थ्रेट बन गया, इतना बड़ा ग्लोबल थ्रेट कि उसके नेटवर्क जो है वो इंडिया तक पहुंच गया और यूरोप तक पहुंच गए। वहां तक बैठे बैठे वो बॉम्ब ब्लास्ट कर लेते थे, यूरोप में भी। ये हाल है आईसिस। और इसका नतीजा का कैसा आया? ये नतीजा है इराक इन्वेजन का। फिर फिर आता है 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन। वो रेजा शाह पहलवी को अच्छा नहीं लगता था यूएस वाला, यूएस को कुछ गड़बड़ लगा। उससे पहले जो था मोहम्मद सदेग, 1925 में मोहम्मद सदेग नाम के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका निकाला यूके और यूएस ने, क्योंकि उनको ऑयल चाहिए था। और उनके जगह किसको बिठाया? रेजा शाह पहलवी को बिठाया। जब रेजा शाह पहलवी से मन नहीं भरा, उनको भी गिरा दिया और उठा के रख दिया ये इस्लामिक रजीम को वहां पे। ये हाल है ईरान का। आज देख लीजिए ईरान का क्या हाल है। तो जब भी यूएस ने जहां इंटरफेयर किया, आप यूएस इंटरफेरेंस बिफोर अफगानिस्तान, बिफोर इराक, बिफोर आप यूएस इंटरफेरेंस ऑफ इराक से पहले का इराक देख लीजिए, यूएस इंटरफेरेंस से पहले का ईरान देख लीजिए, यूएस इंटरफेरेंस से पहले का अफगानिस्तान देख लीजिए, यूएस इंटरफेरेंस से पहले का आप लिबिया देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी बोलता है हम इस्लामिक टेररिज्म से लड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे कैपिटलिज्म को समर्थन कर सकता है, वो भी एक ऐसे ग्लोबल कैपिटलिज्म को विच हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द राइज ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। अलकायदा हो, आईसिस हो, मुजाहिदीन हो, आईएसआईएल हो, अल नुसरा फ्रंट हो, अल फतेह हो, बोको हराम हो, इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ जाते हैं, गिनते गिनते दिन लग जाएंगे आपको। तो सिद्ध रस्सी का बड़े दिनों बाद लाइव कर रहा, हाँ बड़े दिनों बाद लाइव कर रहा था क्योंकि मैं कुछ बुक पढ़ रहा था मैक्स टर्नर का, इसलिए। थोड़ी देर पहले मैंने उदयनिधि स्टालिन पे भी बोला एंड आई सपोर्ट हिज व्यू। और मैंने दो इंस्टेंस लिया था, एक ब्लास्फेमी ऑफ हिंदुइज्म एंड ब्लास्फेमी ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी ऑफ इस्लाम का हुआ, ऑनलाइन में क्या लिख दिया कोर्ट ने? डेथ सेंटेंस। यहाँ पे उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोल दिया? यहाँ पे उसके ऊपर सरतन से जुदा का फतवा पंडितों द्वारा, सो कॉल्ड, ठीक है। वही करते हैं सब, बस कोई स्मार्ट वर्क करते तो कुछ फायदा भी होता। हाँ बिल्कुल। तो पॉइंट मेरा यही है कि यूएस, अभी मैं थोड़ा जियो पॉलिटिक्स पे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है, एंड आई नो यूक्रेन वॉर का नतीजा एक ही है, यूएस इज लूजिंग दिस। क्योंकि रशिया जो है वो अभी नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ मिला लिया है, चाइना के साथ हाथ मिला लिया है, एंड नॉर्थ कोरिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री फ्रंट्स एटलीस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यू नो रशिया, मतलब the biggest loser in Russia-Ukraine war is neither US nor Russia. The biggest loser are Western Europe. वेस्टर्न यूरोप जो है आपका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली और आपका क्या बोलते हैं पोर्चुगल, ये जो वेस्टर्न फ्रंट है, और इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दे आर द बिगेस्ट लूजर्स इन रशिया यूक्रेन वॉर, इकोनॉमिकली एंड सोशली। ये है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट कॉलोनियल में भी कंट्रीज की कॉलोनियल माइंडसेट नहीं गई। पार्टली अग्रीड, आई डू अग्री, बट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, समथिंग विच आई कॉल एस कॉर्पोरेट। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताता हूं जो दुनिया का बड़े बड़े कंपनी को नचाता है। 200 साल पहले एक कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था,
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, सबने अपना एक ब्रांड बना लिया था ईस्ट इंडिया के नाम पे। एक और ब्रांड है जो आज के टाइम पे सबको नचा रहा है, मैं उसका नाम बेचता हूँ यहाँ पे। ये आपका अ, तो 21st सेंचुरी का ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम का कुछ ऐसा है, ब्लैक स्टोन। चेक कीजिएगा इसको। 1 ट्रिलियन एसेट्स को ये मैनेज करता है पूरे दुनिया में, बड़े बड़े कंपनियों का। मैं दूसरा एक और भेजता हूँ यहाँ पे, ब्लैक रॉक, वो भी। ये लीजिए ब्लैक रॉक, एक और कंपनी का नाम है, जाके चेक कीजिएगा। आज के ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम मैं बता रहा हूँ, सो कॉल्ड। ठीक है, तो ब्लैक रॉक, इसका ब्लैकस्टोन का टोटल एसेट्स है 1 ट्रिलियन, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $1 ट्रिलियन। ब्लैक रॉक का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 9 ट्रिलियन, नियरली 9 ट्रिलियन। तो इनके लिए लॉस का कोई मतलब नहीं है, लॉस हो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला इनका। इतना पैसा है कि भाई आप लूट भी लो तो फर्क नहीं पड़ता है भाई। मतलब क्या कर लोगे, मैं फिर भी कंट्रोल कर रहा हूं सबको। ये है वो कंपनी। और दोनों कंपनी के जो फाउंडर है वो यूनाइटेड स्टेट्स के डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब वो पार्टी जहां से जो बाइडेन इलेक्ट हुए हैं, उस पार्टी में मेंबर है, दोनों के दोनों। सोचिएगा। तो कॉलोनियलिज्म भी एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ मर्केंटाइलिज्म, मर्चेंट क्लास। मर्चेंट क्लास का जो कैपिटलिज्म में जो प्राइवेट फाइनेंस है, प्राइवेट फाइनेंस का ही नतीजा है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी था, प्राइवेट आर्मी था। ठीक है, बाद में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया 1779 में, तब जाके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज किया। बट अदरवाइज वो प्राइवेट कंपनी ही शुरू हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा था, जो इंडिया में आके इंडिया को लूट रहे थे। सो द प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज अ बिग ड्राइवर फॉर यूएस। ताजुब की मैं एक और बात बताता हूं। टॉप 5 डिफेंस इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, 5 लार्जेस्ट कंट्री यूएस, उसके नेक्स्ट है चाइना, उसके नेक्स्ट है आपका आई थिंक आई थिंक जर्मनी, इट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जर्मनी और रशिया। ठीक है, जर्मनी फिर रशिया और उसके बाद, हाँ, जर्मनी के बाद आता है इंडिया, और इंडिया के बाद आता है सऊदी अरेबिया। सो ये 5 कंट्री है जो डिफेंस में टॉप है। यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, टॉप 5। यूएस जो है $877 बिलियन खर्च कर रहा है अपने सो कॉल्ड मिलिट्री डिफेंस पे। चाइना जो है, ये देखिएगा सेकंड लार्जेस्ट, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट का देखिए कितना है, $292 बिलियन। इंडिया का है फिलहाल $84 बिलियन। ठीक है, खर्चा डिफेंस के बजट का जीडीपी में। तो सोचिए क्या हाल है देश का। मतलब यूएस जो है वो चाइना से लगभग दुगना, चाइना से भी दुगना ज्यादा खर्च कर रहा है मिलिट्री में यूएस। अभी यूएस जो है नाइजर में वॉर कर रहा है। नाइजीरिया में एक नया गवर्नमेंट आया है नाइजर में,
It is a military government, military dictatorship. I'm not a fan of military dictatorship. Let me be very clear. But they are certainly better than France and US controlled puppet. यूएस और फ्रांस का जो पपेट गवर्नमेंट था उसको गिरा के मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया और उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे यूएस अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाए और फ्रांस अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाए। ये उनका अल्टीमेटम था। फ्रांस वहां पे बॉम्बिंग करना चाहता है, यूएस वहां पे बॉम्बिंग करना चाहता है। अरे भाई क्या कर रहे हो? बोको हराम को पैसे दे रहे हो क्या? डायरेक्ट जब गवर्नमेंट को पैसे डायरेक्टली जब गवर्नमेंट को कोई गिरा नहीं सकता यूएस, तो वहां के लोकल एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को पकड़ेगा और उसको फंडिंग करके टेरर ग्रुप में बना देगा। अब इस्लाम वी नो ऑलरेडी, इट्स लाइक अ चिंगारी, इट्स लाइक अ फायर। बस उसको घी की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है बस। had US not given the weapons and the money to Islamic terror group, वो टेरर ग्रुप होकर भी आज कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। ना ही सुसाइड बॉम्बिंग कर पाते, ना ही 9/11 कर पाते, ना ही वो टैंक्स यूज करके अटैक्स कर पाते, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर पाते वो। लेकिन नहीं, पैसा दिया गया, वेपन सप्लाई किया, और ये एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी जो यूएस मिलिट्री को वेपन सप्लाई करता है, वही कंपनी जो है वो टेररिस्ट को भी वेपन सप्लाई करता है। ये है सच्चाई इस यूएस कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का। तो उनका कोई डिफेंस नहीं है, उनका जो है मोस्टली ऑफेंस है। अगेन, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरियन वॉर इज नॉट ऑफिशियली एंडेड. The North Korea and South Korea haven't signed a treaty or agreement between those two countries, so war is still continuing, and there is a demilitarized zone between North Korea and South Korea. US will never solve this problem. They don't want to solve this problem of North versus South. Whereas solution is very simple, it can be solved, but they will not solve. Same thing, Israel Palestine. Solution is very simple, but they won't allow it to be solved. You have Afghanistan war, which was a failure, Vietnam war, which was a failure, Iraq war, which was a failure, Ukraine war is also turning out to be a failure. The sanctions against Russia hasn't worked. रशिया के ऊपर यूएस ने जितने भी सैंक्शन लगाए थे, उन्हें ये सोच के कि रशिया की इकोनॉमी डूबेगी, उल्टा हो गया। रशिया की इकोनॉमी डूबी नहीं है। रशिया हैज फाउंड मेजर ट्रेड पार्टनर्स इन चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, उनकी इकोनॉमी बच गई, so they can manage even without the US dollar. So the biggest hit taken by the US sanction is not Russia. US sanction का biggest hit अगर किसी ने लिया है तो वो फ्रांस ने लिया है, यूके ने लिया है, जर्मनी ने लिया है, स्पेन, इटली ने लिया है। The European Union countries are the biggest losers in this economically, not Russia, not China in this case, and that's the truth. सॉल्व हो गया तो वॉर इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, या एंड दिस इज वन रीजन व्हाई आई डू अपोज प्राइवेटाइजेशन एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशन ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्री।
Hello. Yeah, let me continue. Yeah, definitely. That's one reason why I don't support big private corporations in military industry. Either military industry is nationalized or it is controlled by the public opinion, rather than some corporate with few people who claim to have a monopoly over technology controls that institution. Military should be a public institution with state government or under the public opinions. I mean, if any military action has to be taken, if country decides there is a military action, it's better to have a public poll on it rather than just going on a war. Because let me give you statistic. 1% increase in the military expenditure leads to a 9% slowdown in GDP. And it's a statistic. Imagine had US not increased its military budget by 1% and instead focused on keeping the military budget as it is, US economy would have been growing by like 10%, 8% or something like that. But no, 1%, 2%, 3%, they have been increasing over the years, the military budget. And now US economy grows by mere 1%, 2% GDP growth rate. So remember this math. 1% increase in the military expenditure of the GDP leads to 9% decrease in a GDP over a decade. So, for example, from 2021 to 2030, I increase my military budget by 1% for this entire decade. Then my economy, the GDP growth rate, overall will take a hit by 9%. And that's significant. It's not a small statistic. So because military is highly classified and highly concentrated, where the focus is on artilleries, ancillary industry, and there are tech. Okay, so there seem to be a monopolization, and when that monopolization happens, most of the resources become concentrated on the military. Whereas in an economy, ideally you want the resources to be distributed over a wide range of economic practices, over a wide range of economic occupations. But when those resources are taken away from wide range of economic occupations and goes into military, the country's economy goes down. Sidrasika military shouldn't be privatized, yeah. And that is one reason why I don't like the idea of Anil Ambani coming back and having a private corporation managing it. Because it's not a joke. It's almost like Anil Ambani will be saying, यार मैं अपने लॉस को कवर अप करने के लिए मैं इंडिया के जीडीपी को भी खाने को तैयार हूं. आई एम रेडी टू टेक अवे द वेरियस डाइवर्स resources of various occupations away and bring it to my military corporation.
even if it means my GDP goes down by 9% over a decade. I'm ready to do that. So that is the stupidest idea. And you look at all the big countries, you look at their GDP growth rate, why their GDP shows like 2%, 3%, 1% growth. Why not 6%, 7%, 8% when it is possible to grow that way? The reason is very simple. Diverse resources which are distributed over different occupation are somewhat concentrated towards military as the budget increases on the military, and as private corporation tends to have a very strict monopolization, the economy goes down. So what the private corporation needs is they need money, they need liquidity, they need financing. Where are they going to get it? They're going to get it from government. So government will have no other option but to take away that money from various resources and occupation and put that in the hands of private military company. And the private military company virtually does nothing. They hire experts and they come up with various other innovation technology and call it whatnot. Okay. But with all that, what they're doing is they're sacrificing areas like education, healthcare. They are sacrificing uh, fundamental research and many other areas, or many other areas get subverted over a period of decades. That's what you need to keep in mind. बाय आई तमिल लीडर MK स्टालिन को हाँ मैं करता हूँ ओनली as long as he is critical of superstition. I know Stalin also goes to this Vastu Shastra and astrology. He does. That is not the thing with her. I support him. But as long as he has an open view of religion and he is ready to be critical, then I can support him. Politically, not necessarily, but ideologically on criticizing religion, yes. स्टालिन खुद को सपोर्ट कर ले उतना ही का I think Udayanidhi can support himself. He seems to be confident of facing the case in the court. So I don't think he should have any problem. Probably he has done some amount of study and research on the subject matter. So I don't think that should be a problem. And why should people think BJP is the one who is going to protect Hindus? The fight is not between Hindus versus Muslim. I mean, let's take an example. Imagine had US not created Mujahideen, had US not supported Al Qaeda, okay? I don't think you would have ISIS penetration or Wahhabism into India. No, you wouldn't have had. I'm pretty much sure. So the Islamic extremism in India would have been down, at least by now, had US not interfered, okay, by providing money and arms to terrorist group by 50% in India, by 50-60%, which is significant itself in India. You would not have had any PFI, you would not have had any, SDPI or other Islamic organizations. No, you would not have had any Wahhabist groups in Kerala. You would have had much better control over the situation. So those people who say Islamic terrorists are like this, Muslim do this, Muslim do that, while Islam is bad on its own, who did the job of providing oxygen and that spark, that but to it? Who did that? So who said BJP is protector of Hindus? I was reading Times of India comment section there regarding the article on Udayanidhi. They were literally commenting that we need to vote BJP because they are the only protectors of Hindus.
then one question would be one question would be that why are so many non-Muslims not getting citizenship in Assam, who are still outside, who are considered outcast as per the NRC list. There are 15 lakh Hindus. So what is that? If BJP is protector of Hindus, then I supported Udaynidhi Stalin on his comment on Sanatan Dharma. Okay, now if suppose Udaynidhi Stalin says Islam is great or Christianity is this, Christianity is that, I am not going to support him. I will probably rebuke him, saying that he has not read Bible, he doesn't know Quran, he doesn't understand Islam, he thinks it's good alternative, but it is not. Okay, but since he hasn't said and he has only told about Sanatan Dharma, yeah, then as long as it's critical, yes, I'm supportive. Okay, I'm talking about the son of MK Stalin here. तो ये है. And anybody, and most people who actually vote for BJP, they fail to realize this. The very Islamic terrorism that you claim to fight is the very same terrorism which was created by the US and the CIA ecosystem. It was created by the CIA and the US ecosystem, which is what you are supporting. आप फाइट किसको कर रहे हो? If you have to fight it on two front, on the economic front and on the religious ideological front. Until that happens, then there is no, point telling that I fight Islam, but I support US, I support capitalism. And this is where Kushal Mehra makes me laugh. Literally मेरे को वो हंसी दिलाता है. I mean, when Kashmir Files was released, okay, he was happy and said, this is what free market is all about, this is what capitalism is all about, this is that. Since capital and market, when government is giving a tax free, how is it free market capitalism, folks? When government is interfering and giving tax free, that movie, so government is interfering, so how is it even capitalism, or even remotely free market capitalism? When they're even endorsing it, they're putting poster and encouraging government employees to go and watch. When there is a clear interference by the establishment and the government, how is it even free market capitalism for that movie? So either Kushal Mehra doesn't understand what ideally free market capitalism means, or he is kind of becoming hypocritical in that he says monotheism is this, monotheism is that, but US capitalism is great, I like that. Wow. CIA is a private corporation. How many people know that here? CIA has a bigger control over US president than the president over CIA. CIA is controlled by the military corporations, big military corporations, military industrial complex. So companies which make military warfare weapons and equipments, they run CIA, they run, this army and etc., all those things, CIA, etc., etc. They even have their own private army. So question is, if this is not capitalism building its own structure, and that structure leading to the rise of ISIS, Al-Nusra, Al-Qaeda, Mujahideen and whatnot, and yet you say, I'm okay with capitalism, but I'm not okay with Islam. Wow. I mean, in today's time, Islam has been married to the US CIA agents. Literally. That's what has happened. Literally. You look at Afghanistan, you look at Iraq, you look at Saudi Arabia, you look at Nigeria, you look at
Boko Haram, you look at Sudan, you look at even Libya. I mean, am I joking here? It's a very hypocritical position to take, literally. This is where he makes me laugh. इंटेंशन मैटर्स करता है क्रिटिसाइज करने के पीछे, अगर आपका इंटेंशन पॉलिटिकल है क्रिटिसाइज करने के, at the end of the day political party has to play some of its political card. However, I'm my perspective in my channel is because I take a critical view of the religion, and since he's critical of that part, I'm okay with it. I clarified that I don't necessarily mean to support entire political scheme of DMK. That doesn't necessarily mean that. One can understand it. Okay. And that too, he has clarified himself that he is ready to face it in the court. He is going to refer to Ambedkar, Periyar, and their writings, and he is going to give reference. So he seems to be confident on that front there. इंडिया के बाहर भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था मूवी को. Yeah, I mean, how is that even free market capitalism? Whereas you can talk about movies like Pathan, or even what you say, Dangal, etc., etc. Those movies as kind of free market capitalism, where there was very less interference by the government. It was not promoted by the establishment. People took interest on their own. So, yeah. क्यों दिमाग खपाते हो उसके पीछे? He can only be treated by prayers. Whom are we praying to when that person who exists doesn't even know whether he exists or not? We are praying to such imaginary creature who doesn't know whether he himself exists or not, whether he himself is in search of truth or not. We are praying to that imaginary creature here. It's a question. Okay. Yeah. So this was little bit about geopolitics and latest current affair. I would have to do separate live on superstition as well. Then politics, bipole I will discuss. BJP won 3 seats, remaining India Alliance won 4 seats, which is somewhat okay, but it was kind of expected, which was already coming on the cards. So India Alliance, politically speaking, they have still a long way to go. And BJP, I don't know what is wrong, but somebody needs to look at Subramaniam Swami's latest tweets to understand what really this current government is. And the thing that makes me most laugh is he, at the end of the day, wants BJP to win and yet support the bullshit policies of current government on China. You aren't going to handle China until you show them the fist. It's time India shows its fist on Korean issue, North versus South Korea, Israel versus Palestine, on these issues. That's the only way you can counter China. Otherwise, it's a matter of time that sooner or later China will just overtake on these issues. Until you do that, you can't keep spending money simply on the military and you just fight it out like that. No, it doesn't work. You need to play like a chess with the countries. Geopolitics is like a chess. Whatever clearly, that's what matters. If I was prime minister, I would have done like, I would have talked about unification of North and South Korea on economic basis, something which US and China can't think of. I would have thought about building a alternate alliance
apart from Quad, alliance with Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, Hong Kong, etc. Recognize Taiwan as an independent country on its own with a different government. Give stapled visas to Tibetans staying in India. I would have done these things as diplomatically to counter China and send a message out that you enter our border, we are going to take these measures. Talk about unification of North and South Korea. Talk about two-state solution with Palestine having different state with a capital of its own, Israel having a different state with its own capital. Like those things. This would have been my diplomatic approach. Rather than just spending money on the military. Government has been spending money on the military, but it hasn't been giving us the results. So you need to do more deeper thinking. China is like trying to play a game of chess here, Game of Thrones. Government of India has to play its own Game of Thrones here. Banning TikTok app, yeah, maybe it helped, but you need to go and do more than just that. China has its stake in North Korea. US has its stake in Taiwan and South Korea. What if I went there and told, hey, North Korea and South Korea, why are you fighting? Let's unite the country. Let's have a common economic front, okay, focused on the welfare of people, okay, mainly a welfare economy. And along with that, a common, consensus between the government on those sort of things. Let's unify this country economically. Why not? That takes the China and US out of the equation completely. China will have a big setback because that will be giving them a shock. They will get even bigger shock if you recognize India recognizes Taiwan as an independent state with its own capital, with its own geography and linguistic culture. Taiwan, separate country. Another blow to China. Another blow to China will be giving Indian visas to the Tibetans staying in India. That will be another blow, psychological blow. These are the things by which you manipulate or corner China. You not only build Quad, but you build alternate alliance, separate alliance consisting of Japan, South Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapore together. And with these countries, I would have opened a joint bank to counter the Asian Bank in China, an alternate bank. This is the way I would have approached if I was the running the government. I was thinking of an art, Stalin Sanatan ko kaarte hue on a cross. I am not sure if he is really Christian. Uh, I don't support his thinking on Christianity. Let me be very clear. He may be personally believe in that, but अगर वो मेरे सामने आके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेगा तो मैं उसकी भी धुलाई करूंगा. But because he told only about Sanatan Dharma and its criticism, only to that extent I support him. I think I have made this clear for the nth time, hopefully. Bro are supporter of Periyar atheism, Dravidian Nadu nationalism. Okay, Dravidian Nadu nationalism, I don't think that is anything real or even remotely real or even a possibility. Tamil Nadu is a part of India and it will continue to be part of India. I don't think you will have any separate country out of that. I don't think that is even a reality or even close to reality. Periyar during his lifetime, during his movement of Dravidar Kazhagam,
he did imagine that that could have been a possibility, but in 1967, the DMK government ran into an agreement with Congress government of the time, and they agreed that they will be integral part of India, and they will no longer demand continue to demand separate country for Dravidians. So that was one compromise already reached long time back. Okay. As far as Periyar atheism is concerned, I don't think his opinion on religion has anything of an issue to do with. Periyar's opinion on religion and on gender issues, I don't think there is any issue with that. One can read and understand it for the purposes, mostly for intellectual purposes. Not necessarily one has to follow it critically, but one can certainly learn a lot of things as well from it. Kim manega to na. Yeah, that is the only challenge. That's the only challenge part. Uh, but there is a trick to do it actually. Uh, what if Kim was told that you run your family dictatorship? It's all right. Okay. Only thing is you need to change the enterprise and the compromise enterprise of your organizations within the state apparatus. That's all. That's the only change required. Then unification becomes kind of a more of a automatic process here. पॉलिटिक्स में रियल या इम्पोस्टर से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पॉलिटिक्स में फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक. जैसे मोदी जी इम्पोस्टर बनते हैं ना, बाबा जी का कपड़ा पहन लेते हैं, बाबा बन जाते हैं कभी कभी. कभी कभी वो नागा का कॉस्ट्यूम पहन के नागालैंड के बन जाते हैं, मणिपुर का कॉस्ट्यूम पहन करके मणिपुर के बन जाते हैं, पगड़ी पहन करके सिख बन जाते हैं. तो इसलिए थोड़ा ये क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने बता दिया रियल और इम्पोस्टर क्या होता है पॉलिटिक्स में. Okay, with this I end my live. Let's me come with tomorrow's new topic and let's discuss something else in more detail. Okay, bye.